Hello everyone, how are you all? Now, today we discuss about our final revision. Okay, now this time to revise whole subject. आज हम पूरा whole subject को revise करेंगे. Now, in this lecture we discuss about the MCQ, fill-ups, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. और जो हमारा क्लास 12 बायो का जो फाइनल रिवीजन आज हम करने जा रहे हैं, उस जो फाइनल रिवीजन के अंदर हम सेक्शन ए के एमसीक्यू, फिलअप्स और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को आज हम रिवाइज करेंगे. ओके, बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, फिलअप्स रिवाइज करेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज करेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. हम हमारा स्टार्ट करते हैं. ओके, नाउ this is the first question of MCQ. यहाँ पर आपके each question carry half marks. Okay, so now first MCQ, a stamen is regarded as a microsporophyll, megasporophyll, microsporangium या megasporangium. So answer is option A, microsporophyll. Now a typical anther is generally कैसा होता है? This is the tetrasporangiate. कैसा होता है? tetrasporangiate. Okay, now the next is development of anther in angiosperm is. कि development of anther in angiosperm is, anther का development. Okay, angiosperm flowers के अंदर. So this is known as the eusporangiate. What is the right answer? Eusporangiate. Okay, now the teptal cells of anther is haploid, diploid, triploid या polyploid. So what is the answer? Polyploid. जो ये जो petal cells होती है, okay, tapetal cells. Proboscis bodies appear in cytoplasm is. This is tapetum. Okay, so this is known as the tapetum. Good morning. Now, fibrous bands present in endothecium of anther wall is made up of. कि क्या है? Fibrous band present in endothecium of anther wall is made up of. किसका बना है? Is made up of. The answer is alpha cellulose. किसका बना है? Alpha cellulose. Now, the next is glandular type of tapetum secrete. जो glandular type of tapetum secrete किससे secrete होता है? Now, this is the sporopollenin, pollencate, compatibility proteins या all of these. The right answer is all of these. Okay. The exine of pollen grains is composed of. कि जो exine है, the exine of pollen grain, this is composed of. किससे composed होता है? This is the sporopollenin. So what is the right answer? Sporopollenin. Now, the next is the number of germ pores in dicots and monocots pollen grains are respectively. कि क्या है? Number of germ pores in dicots and monocots pollen grains are. क्या होगा? This is the 3-1. कि क्या है? Number of germ pores in dicots के अंदर 3 and monocots में 1. Okay. Now, the next is the two cells at which pollen grains are discharged are. कि जो two cells है at which pollen grains are discharged are. कि yes, what is the right answer? क्या होगा? Large generative cell and smaller vegetative cell, large vegetative cell and smaller body cells, smaller vegetative cell and large body cells, या smaller generative cells and large vegetative cell. What is the right answer? The right answer is smaller generative cells and large vegetative cells. Now, minerals required for germination of pollen grains on stigma are. कि जो minerals required for germination of pollen grains or stigma are. What is the mineral? This is the क्या है यहाँ पर? कैल्शियम. यहाँ पे आपके ऑप्शन ए में कैल्शियम या
बोरोन या मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन या कैल्शियम. So what is the right answer? The right answer is option A. Now the next is pollen tube is produced by. Pollen tube किससे produce होती है? What is the right answer? The pollen tube is produced by exine, intine, both exine and intine या generative cell. The answer is intine. Okay, तो जो pollen tube है, no, answer is B. Pollen tube is produced by intine. Okay, now the next is which of the following is not true for asexual reproduction? क्या नहीं है? Non formation of gameta, absence of syngamy, progeny being similar to parent, male and female parent, bipetal. So what is the right answer? Option D. This is the right answer. Now transfer binary fission occur in case of. किसके transfer binary fission किसमें होता है? What is the answer? The answer is paramecium. बिल्कुल सही. This is the paramecium. The answer is paramecium. Right. Now select the correct dioecious group. कौन सा dioecious group है? Frog, cockroach, leech, earthworm, tinea, leech, cockroach, frog, ascaris, cockroach, tinea, ascaris. So what is the right answer? Option C. Option C. This is the right answer. Cockroach, frog, and ascaris. Now the next is in case of mammal testes are found in scrotal sacs outside the visceral because. So what is the right answer? The right answer is spermatogenesis require a lower temperature. Okay. Now the answer is spermatogenesis require a lower temperature. Now the next is failure of testis to descend is scrotal sac is known as. This is the, what is the answer? This is the answer option D. Cryptochids. Now, the next is which of the following release inhibin to control spermatogenesis? Which of the following release inhibin to control spermatogenesis? What is the right answer? Reta unit cells, जो reta testis है, follicular cells, cutaneous cells या leading cells. So this is the option C. What is the right answer? Option C. Now testosterone is secreted by. किसके थ्रू secrete होता है? Very easy question. Testosterone is secreted by Sertoli cells या फिर आपके सब या ऑप्शन बी सबक्यूटेनिकुलर सेल्स या ए एंड बी या लीडिंग सेल्स या इनर्शियल सेल्स. So what is the right answer? Option D. Right. Leading cells. बिल्कुल right answer. Now the next is vast differences start from which part of the epidermis? किससे vast difference start होता है? Which part of the epidermis? The answer is chorda epidermis. What is the answer? Option C. This is the right answer. Rated testis is highly anastomosing labyrinth linked by the simple squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium या फिर basalt epithelium. The answer is cuboidal epithelium. The answer is B. Which of the following gland is collection of 30 to 40 tubo-alveolar gland की जो आपकी tube-alveolar gland है and surrounds the first part of urethra. कि which of the following gland is a collection of 30 to 40 tubulo-alveolar gland and surround the first part of urethra. So what is the answer? The answer is option C, prostate gland. What is the answer? This is the prostate gland. Now, the next is Norplant is the new form of birth control aid. Okay, this is जो Norplant है is new form of the birth control, जो birth control करता है and it. What is the answer? Allows ovulation but does not allow fertilization. Makes the cervical muscles thin, making sperm entry into the uterus difficulty. Has progestin as the active
ingredient या is effective for a maximum of 1 year. So what is the right answer? Option C. This is the right answer. Yes, option C. This is the right answer. Now, which of the following is not induced under barrier method of birth control? Which of the following is not induced under birth जो barrier method है of birth control? This is the vaginal pouch, diaphragm, cervical cap या implant. So what is the right answer? Option D, implant. This is the right answer. Now, sexually transmitted disease can get transmitted easily during use of. ये आपके सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं. एमसीक्यू आपकी पूरी बुक में जितने भी आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जिन जिन चैप्टर्स से एमसीक्यू पुटअप होते हैं ये उन्हीं सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू हैं. ओके, sexually transmitted disease can get transmitted easily during use of diaphragm, cervical cap, birth control pills या all of these? The answer is all of these. The next is the diaphragm is rubber dome shaped structure and stops the sperm from entering into vestibule, vagina, cervix, both A and B. The answer is cervix. Among the following methods, which one has the highest failure rate? Diaphragm with spermicides, condom, या फिर intrauterine device या rhythmic method? So what is the right answer? Option D. This is the right answer. Now, in case of a person suffering from syphilis, the catheter's formation occur during. So what is the right answer? This is the primary stage. Yes, this is the RBSE board. ये RBSE board के ही हैं, आप join कर सकते हैं. Yes. Now, the symptom/period of latent period in case of syphilis may last 4. कितना है? This is the 1 to 5 weeks, 6 to 24 weeks, 4 to 12 weeks या 20 years. So what is the right answer? Option D. बिल्कुल सही option D. This is the right answer. Now, which of the following STD and its causative agent is not correctly matched? इसमें से which of the following STD and its causative agent is not correctly matched? कौन सा correctly match नहीं है? The syphilis. सबसे पहले है आपका genital warts, ये hemophilus या फिर आपका syphilis है, trypanomena या फिर आपका genital herpes है, सेकेंड herpes simplex वायरस या फिर आपको ट्राइकोमोनासिस है. दिस इज द ट्राइकोमोनास. तो यहाँ पर आपका जो विच ऑफ द फॉलोइंग एज पॉजिटिव एजेंट इज नॉट करेक्टली, जो करेक्टली मैच नहीं है. द आंसर इज ऑप्शन ए, जेनाइटल वॉर्ड. दिस इज द मिसमैच. ये आपका मिसमैच है. बाकी सारे आपके पॉजिटिव एजेंट है, सारे आपके मैच करते हैं. ठीक है, तो इन पॉजिटिव एजेंट से आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है कि विच इज द पॉजिटिव या व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस. ठीक है, यानी या फिर जेनाइटल हर्पिस टाइप का या ट्राइकोमोनासिस किसका है. ठीक है, तो ये सारे आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी पुटअप हो सकते हैं. इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्री in the world to initiate action plans and programs at a national level to attain reproductive health. These programs called as family planning were initiated in year in India. कि कौन से ईयर में ये इनिशिएट हुए थे? Yes, what is the answer? कौन से ईयर में हुए थे? India was the among first country in the world. ये यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है. Which is the first country in the world इनिशिएट एक्शन प्लान प्रोग्राम इन नेशनल लेवल? तो कौन सी कंट्री आ जाएगी आपकी? इंडिया. ओके, नाउ ऑप्शन ए बिल्कुल सही. दिस इज द राइट आंसर, 1951. नाउ द नेक्स्ट इज द फ्रेज लाइक बैगेट्स लाइफ इज बेस्ट एनालाइज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ. दिस इज द फॉरवर्ड जेनेटिक्स, क्लासिकल जेनेटिक्स,
reserved genetics या both A and B? So what is the right answer? Option B. This is the right answer. Now the term genetic was coined by, कि जो genetics की term given थी was coined by किसने दी? Batson, Mendel, Morgan या Johansson? So what is the right answer? Option A, Batson. This is the right answer. Now the next is, which of the following inheritance or theory is based on blending concept and explain gramule as the basis of inheritance? तो यहाँ पे जो आपका gramule है as the basis of inheritance, तो what is the, which of the following inheritance of theory, कौन सी inheritance of theory is based on the blending concept and explain gramule as the basis of inheritance? This is the performation theory, पैराजेनेसिस, रिप्रोडक्टिव या मेंडेलियन इनहेरिटेंस? तो व्हाट इज द आंसर? दिस इज द ऑप्शन बी. आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी. नाउ मेंडल एक्सपेरिमेंटल प्लांट वाज पाइसम सटाइवम, बट ही आल्सो वर्कड एंड फेल्ड टू फाइंड सिमिलर रिजल्ट. और कि क्या है मेंडल एक्सपेरिमेंट? मेंडल ने किसमें एक्सपेरिमेंट किया था? पाइसम सटाइवम. दिस इज द बॉटनिकल नेम ऑफ पी प्लांट. ओके, तो आपको इसका बॉटनिकल नेम पता होना चाहिए. दिस इज द पाइसम सटाइवम. बट ही आल्सो वर्कड एंड फेल्ड टू फाइंड सिमिलर रिजल्ट. और उसने इसके साथ जो सिमिलर रिजल्ट करे थे, और कौन से प्लांट पर करे थे जिनमें उन्हें सिमिलर रिजल्ट नहीं मिले थे? तो दिस इज द टबैको एंड स्वीट पी, हेराइकियम एंड लैब, हेराइकियम एंड स्वीट पी या लैब एंड स्वीट पी. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन B. This is the right answer. Now, जो precursors मेंडल was as, कि जो precursors हैं मेंडल के, ग्रॉस है, कोलर्टन है, नॉर्डिन है या all of these? So what is the right answer? All of these. Now, Mendel read out and present his paper in the सेमिनार ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्न. तो बर्निंग इस किसमें का होगा? क्या होगा? कब करा था उन्होंने? व्हाट इज द टाइम पीरियड? 1857, 1859, 1866 या 1865? तो व्हाट इज द राइट आंसर? दिस इज द 1865. नाउ द नेक्स्ट इज, who among the following found out of the original paper of Mendel and got it published in Player? तो कौन थे इसमें से, कौन थे जिन्होंने फाइंड आउट द ओरिजिनल पेपर ऑफ मेंडल, ओरिजिनल पेपर ऑफ मेंडल को फाइंड किया था एंड गॉट इट पब्लिश्ड इन फेलियर? उन्होंने उसको पब्लिश किया था. दिस इज द डीवेरिस, कॉरेंस, टीस्मार्क या कॉलरेड? तो व्हाट इज द राइट आंसर? डी विरिस. ओके, ह्यूगो डी विरिस ने पब्लिश किया था. नाउ फाइंड ऑड वन आउट. इसमें से आपको फाइंड आउट करना है विच वन इज रॉन्ग. येलो कॉटिलीडन, येलो पॉट, टर्मिनल फ्लावर या कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉट? तो व्हाट इज द राइट आंसर? यहाँ पर आपका ऑड वन आउट कौन सा है? दिस इज द येलो कॉटिलीडन. तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए. Now, which one of the following Mendelian traits is present on fifth chromosome? Which one of the Mendelian traits is present on fifth chromosome? What is the answer? क्या आंसर आएगा? पॉट का शेप आएगा, पॉट का कलर, फ्लावर कलर या पॉट पोजीशन? व्हाट इज द राइट आंसर? क्या है राइट आंसर? बताइए जल्दी. व्हाट इज द राइट आंसर? कि इसके अंदर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग Mendelian traits is represent on fifth chromosomes? कौन रिप्रेजेंट करता है फिफ्थ क्रोमोसोम पे? व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज ऑप्शन बी, पॉट कलर. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज the recombinant phenotypic ratio in F1 generation obtained from parent cross having genotype TTRR cross with TTRR will be, कि क्या है? The recombinant phenotypic ratio, जो recombinant phenotypic ratio है in
one obtained from parental cross having genotype TTRR with TTRR will be, तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट फिनोटिपिक। यहाँ पर ये ध्यान रखना फिनोटिपिक रेशियो नहीं है, रिकॉम्बिनेंट फिनोटिपिक रेशियो है। ओके, दिस इज द रिकॉम्बिनेंट फिनोटिपिक रेशियो जो हम ऑब्टेन करते हैं हैविंग जीनोटाइप, जो टीटीआरआर को क्रॉस करके कैपिटल पी डोमिनेंट एंड रिसेसिव से क्रॉस कर रहे हैं। द रेशियो इज 9:3:1, 3:1, 1:2:1 या 3:3। द आंसर इज 3:3। So what is the answer? The answer is 3:3. Okay, now the strongest evidence in favor of DNA as genetic material comes from, कि जो strongest evidence है in favor of DNA, DNA के फेवर में जो strongest evidence है कि DNA क्या है as a genetic material, कि क्या है कि evidence of DNA as genetic material comes from, किसने दिया था, किसके एक्सपेरिमेंट से आया था, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, टॉयलर के एक्सपेरिमेंट के अंदर जो टायर है उन्होंने दिया था, या कैरेंस ने दिया था, या कॉन्जुगेशन के जो एक्सपेरिमेंट है उसके थ्रू आया था। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए, दिस इज द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। किसने दिया था? ये ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से आया था कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। Molecular explanation for transformation was given by, जो molecular explanation है for किसके लिए transformation was given by, किसने दिया था? ग्रिफिथ ने, एवरी ने, या फिर लैडबर्ग एंड टैटम ने, या एवरी एंड मैककार्टी ने। तो यहाँ पर आपका एवरी, मैककार्टी एंड मैकलॉड, दिस इज द ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। Now, the next is radioactive element used to label DNA of bacteriophage in Behring blender experiment of Hershey and Chase was. This is the P32. So, what is the right answer? The right answer is P32. Transformation principle in Griffith experiment explains, कि जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का, एक्सप्लेन कौन, एक्सप्लेन क्या एक्सप्लेन करता है? सर्टेन रूल्स फॉर ऑक्सन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, जो ऑक्सेनिक कल्चर है, या फिर इंग्रेडिएंट्स कल्चर मीडिया, या फिर केमिकल सब्सटेंस रिलीज बाय एस टाइप, या फिर केमिकल सब्सटेंस रिलीज बाय आर टाइप। तो ये है आपका ऑप्शन सी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ some viruses do not have DNA, this suggested that, कि जो some viruses do not have DNA, जिनके पास DNA नहीं होता, this suggests that they are non-effective virus. RNA is the genetic material in these viruses. DNA is not the genetic material. RNA is the self-replicating molecule. So what is the right answer? Option B. This is the right answer. RNA genetic material in plant viruses was shown, कि RNA genetic material है in plant viruses was shown, किसने शो किया था? हर्शे एंड चेस ने, फ्रैंकल ने, या कॉनरेड ने, एफ ग्रिफिथ ने, या लैडबर्ग एंड टैटम ने। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी। नाउ largest biomolecule in the cell which show autocatalytic and heterocatalytic function is, कि जो largest biomolecule है जो autocatalytic and heterocatalytic दोनों function show कर रहा है, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए या कार्बोहाइड्रेट। तो व्हाट इज द राइट आंसर? क्या है हमारा राइट आंसर? दिस इज द डीएनए। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, DNA. Now, who gave 3D model of BDNA? 3D model of BDNA का किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रेग, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, या एफ मैरिस्टर, या जेट चेरीज। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ये तो सबसे सिंपल है, हु गैव द 3D मॉडल ऑफ BDNA, किसने दिया था? व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर बताइए, किसने दिया था 3D मॉडल ऑफ BDNA? The answer is option A, Watson and Crick. BDNA का किसने दिया था? Watson and Crick ने।
Yes, bonding between deoxyribose and base in pyrimidine nucleoside molecule is, कि जो बॉन्डिंग है बिटवीन किस किस के बीच में है, डीऑक्सीराइबोस एंड बेस इन pyrimidine न्यूक्लियोसाइड मॉलिक्यूल इज, कि जो pyrimidine के बीच में है और डीऑक्सीराइबोस के बीच में है. So this is the 1,1 glycosidic linkage, 1,6 glycosidic linkage या फिर 1,9 glycosidic linkage या 1,4 glycosidic linkage. तो यहाँ पर क्या आएगा कि डीऑक्सीराइबोस बेस इन pyrimidine nucleoside molecule is, the answer is 1,1 glycosidic linkage. Okay, now the next is, according to Chargaff rule, A plus T upon G plus C value in E. coli and human being respectively, कि अगर हम चारगॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो चारगॉफ रूल क्या कहता है, A plus T इक्वल्स टू G plus C. ओके, तो यहाँ पर तो अगर E. coli के अंदर हम बात कर रहे हैं तो दिस इज द 0.93 एंड 1.52, तो ये रेस्पेक्टिवली क्या रेशियो रहेगा, 0.93 एंड 1.52. नाउ द नेक्स्ट इज, बेसिक यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज, इवोल्यूशन की बेसिक यूनिट क्या है, स्पीशीज, पॉपुलेशन, इंडिविजुअल या म्यूटेशन. व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी पॉपुलेशन. क्या है राइट आंसर, पॉपुलेशन की जो बेसिक यूनिट और इवोल्यूशन की है. इवोल्यूशन इज डिफाइंड एज, किससे हम डिफाइन करते हैं, इवोल्यूशन इज डिफाइंड एज हिस्ट्री ऑफ रेस, डेवलपमेंट ऑफ रेस, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रेस विथ इवोल्यूशन, प्रोग्रेसिव हिस्ट्री ऑफ रेस. So what is the right answer? Option C, history and development of race with evolution. Origin of Earth dates back to, the origin of Earth dates back to, what is the right answer? 3,500 million years ago, 4,600 million years ago, 2,900 million years ago, या 10,000 to 20,000 million years ago. So what is the right answer? Option B, right, बिल्कुल सही, B, this is the right answer. Eukaryotes developed around, यूकैरियोट्स कब डेवलप्ड होते हैं, यूकैरियोट्स डेवलप्ड अराउंड 1600 मिलियन अगो. So what is the right answer? Option A, this is the right answer, कि कब हुआ था, 1600 million years ago. Now simple one called cyanobacteria like organism appeared on earth, कि जो सिंपल वन सेल साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो नोन एज द ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया को और हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी. तो सिंपल वन सेल साइनोबैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म अपीयर्ड ऑन अर्थ, कब हुए थे, 3.3 to 3.5 बिलियन ईयर्स अगो. कब अपीयर हुए थे, 3.3 to 3.5 बिलियन ईयर्स ago. Now, theory of abiogenesis or spontaneous generation was finally disappeared by, कि किस अब disapproved by, किस theory of abiogenesis and spontaneous generation was finally disapproved by, किससे disapproved हुई थी, लुइस पॉस्चर, AI ऑपरेन, AR वॉलरेस या सैडने फॉक्स. व्हाट इज द राइट आंसर, लुइस पॉस्चर. दिस ए बिल्कुल सही आंसर है. नाउ which of the following experiments suggest that simplest living organism could not have originate spontaneous from the non living matter. so what is the right answer? तो इसके अंदर है आपका कि meat was not spoiled when heated and kept sealed in a vessel. Option D, this is the right answer. The proponent of the theory of spontaneous generation was, किसने दी थी, वॉन हेलमैन. ओके, तो क्या है आपका आंसर,
von Helmont. According to cosmozoic theory, life comes on Earth from other planets in space in the form of कि जो cosmozoic theory है, life comes on Earth from other planets in space in the form of किस form में आती है? Spores, seeds, gamete या all of the above. The right answer is option A. Option A बिल्कुल सही है, spores. The theory that living organism on the earth come from outer space is based on the study of किसके है? The theory of living organism on the earth come from outer space is based on the study of. This is the meteorite. So what is the right answer? Option C. This is the right answer. Which infectious disease can be treated effectively using oil or chenopodium? कि यहाँ पर आपको बताना है which infectious disease can be treated effectively using oil of chenopodium. The answer is ascariasis. What is the answer? Option A. In one of the following disease, fever must not be managed during aspirin. Instead, paracetamol is used. Which one? कि one of the following disease fever, जो फीवर के अंदर must not be managed using aspirin. Instead of paracetamol is used. तो किसके फीवर में हम नहीं यूज में लेते? In one of the following disease fever must not be managed using aspirin. Instead of paracetamol is used. तो कौन सा फीवर है? This is the dengue. What is the right answer? Dengue. बिल्कुल सही. Now, if you are advised to get a vital test done for yourself, which disease is your doctor suspecting? कि कौन सी disease है? Typhoid, cholera, pneumonia या filariasis? What is the right answer? Very easy question. What is the right answer? Vital test. This is the one word question also. कि vital test हम किसके लिए करते हैं? What is the disease? कौन से डिजीज के लिए हम वाइडल टेस्ट करते हैं? तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए, टाइफॉइड. ओके, द आंसर इज ऑप्शन ए. योर पेशेंट शोज paroxysms of malaria after every 72 hours. Which species of plasmodium will be considered responsible to cause the infection? So what is the right answer? Option C, P malaria. कि मतलब plasmodium किसके? प्लाज्मोडियम मलेरिया. Which stage of plasmodium parasite is ineffective for? The option is sporozoid. Perceptions letter reads the following treatment advice: metronidazole, trinazole, emitting. Which among the following disease is it dealing with? This is the amoebiasis. Which type of cancer can be caused by exposed to cadmium oxide over a long period of time? This is the option D, lungs. A plant known as Sadabar is known to produce an anti-cancer drug known as Vinstream. ऑप्शन बी. अभी हमें थोड़े से fill in the blank और very short question answer सॉल्व करेंगे. A cancerous condition known as Burkitt's lymphocyte is known to be caused by virus like option C, Epstein-Barr viruses. The genome of HIV, the causative organism of AIDS, is made up of. कि genome of HIV कौन सा causative agent है? This is the single strand RNA. So this is the ssRNA. Now, first mycoherbicide of the world was obtained from. किससे मिला था? Phyto, option B, Phytophthora palmivora. Concept of sustainable agriculture lies using spores of Bacillus thuringiensis for pest control. Which of the following has been used for controlling sugarcane leaf hopper? The answer is option A, predator bug. Now,
The next is find the odd one out. This is the Colchi Himalaya. Sustainable agriculture does not induce. Sustainable agriculture does not induce. तो ऑप्शन बी ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो सस्टेनेबल है उसके अंदर क्या नहीं आएगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन बायोपेस्टिसाइड. क्या इंक्लूड करेंगे, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई एंड प्रोटोजोआ. बायोफर्टिलाइजर्स इंक्लूड, बायोफर्टिलाइजर में क्या इंक्लूड होता है, दिस इज द ब्लू ग्रीन एल्गी, राइजोबियम, अदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड माइक्रोराइजिया. डिवाइन एंड पॉलीगो आर टू एग्रीकल्चर सब्सटेंस दैट आर यूज्ड एज, जिसे हम किस में यूज लेते हैं, बायो हर्बिसाइड्स के अंदर. गंगा एक्शन प्लान फॉर कंट्रोलिंग पॉल्यूशन इन गंगा स्टेट्स इन, कब स्टार्ट हुआ था, इन 1985 की स्टार्टेड, कि जो गंगा एक्शन प्लान है कब स्टार्ट हुआ था, 1985. Which of the following statement is incorrect? Pectinase. So they are used in chili, propylene, beer and whiskey. Which of the following cannot be related to the biotechnology? इसमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म. Which of the following specific DNA sequence is responsible for initiating replication? So this is the ORI site, origin of replication site. Now, autonomous replicating circular extrachromosomal DNA of prokaryotic cell is called, this is the plasmid. So what is the right answer, plasmid. Key tool to be involved in recombinant DNA technology are, so what is the answer, restriction enzyme, polymerase enzyme, ligase या vector. तो all of the four. तो यहाँ पर आपके A, B, C, D सभी हैं, ठीक है. The first restriction endonuclease to be discovered was, this is the Hind second. Approximately how many restriction enzymes have been isolated from the different over 230 strains of bacteria? This is the 900. The conventional method for naming the restriction enzyme is followed in case of EcoR1. The R indicate, R किसको indicate करता है, stain को. The restriction endonuclease enzyme binds to DNA and cut. Option D, each of the two stands at a specific point in their sugar phosphate backbone. The term niken was given, किसने दी थी, ग्रेनियल ने. किसने दी थी, ग्रेनियल ने. A large regional unit characterized by a specific flora and fauna is called, this is the option A, biome. A group of individual graphical area at a particular time is called living a particular geographical. This is the both A and B. यानी आपके local population and dim. Functional role and status of species in a community is called, this is the ecological niken. So what is the right answer? Option B. The organism living in Arctic and Antarctica climate zones are called, this is the option D, hexothermal. The two climatic factors which largely determine the vegetation and soil types are, this is the temperature and precipitation. Okay. Now, what is not true regarding ecosystem? क्या नहीं सही है regarding ecosystem? Option C, only requirement is input of energy. What is not a structural aspect of ecosystem? What is the answer? Productivity. Amount of living material and nutritional present in different trophic level and soil at any given time are called respectively standing crop and standing stave. An ecosystem contains
This is the green plants, animals decompose in abiotic environment. When a habitat is subdivided into parts which show distinct properties is called microhabitat. Which of the following are artificial aquatic ecosystem terms? This is the fishery, tank and aquaria. तो ये हमारे सारे MCQ कंप्लीट हो चुके हैं. पूरे आपके जितने भी चैप्टर्स में MCQ पुट अप हो सकते थे वो सारे चैप्टर के MCQ हमने कर लिए. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. तो गैस्ट्रेशन पीरियड इन ह्यूमन फीमेल इज कितने दिन का होता है गैस्ट्रेशन पीरियड? तो दिस इज द 280 डेज. कितने दिन का होता है? 280 डेज. So what is the answer? 280 days. A secondary oocyte has a haploid chromosome number while a fertilized ovum has a diploid chromosome number. Okay? तो यहाँ पर आपके secondary oocyte has a haploid chromosome number और जबकि while fertilized ovum has a diploid chromosome number. Now, spermatozoa are produced in the seminiferous tubules. Spermatozoa कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? In the seminiferous tubules of testes, while the ova are formed in the follicle. तो ova कहाँ फॉर्म होते हैं? Follicles of the ovaries. Capacitation is the process by which the sperm prepare itself to fertilize the ovum. Okay, तो ये आपके वन वर्ड भी हो सकता है. What is capacitation? Okay, capitation भी आ सकती है. तो the process by which the sperm prepare itself to fertilize the ovum. लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे. आज हम सारा सेक्शन ए ही करेंगे. ओके, सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यू, फिलअप्स एंड वेरी शॉर्ट. लॉन्ग, शॉर्ट और ऐसे टाइप क्वेश्चन आंसर हम हमारे कल के लेक्चर में करेंगे. द आर्केंटॉन गैस्ट्रुला इज लाइन एंडोडर्म प्राइमरी जर्म सेल. Yolk cell act as a extra embryonic gut while allantois act as a extra embryonic kidney. Okay, now the next is internal ear is ectodermal in origin while middle ear is endodermal in origin. During amniocentesis, amniotic fluid is withdrawn during second trimester. About जो second trimester होता है about 14 to 16 weeks. In GIFT, egg and sperm meet in the fallopian tube of oviduct. जो GIFT होता है इसकी फुल फॉर्म अभी हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में देखेंगे. In GIFT, egg and sperm meet in the fallopian tube oviduct. Artificial insemination means introduction of sperms into the female reproductive tract artificially. Okay. Administration of progesterone estrogen combination or IUD are effective within a 72 hours of coitus. कितने hours? 72 hours of coitus. Disease of infection which are transmitted through sexually intercourse are collectively called sexually transmitted disease. A disease, genital herpes, is a viral disease. ये ध्यान रखना, जेनाइटल हर्पिस किसके थ्रू होती है? वायरल यानी वायरस के थ्रू. वायरल बी डिजीज है. ठीक है. A test cross and distinguish the pure dominant from of heterozygous dominant. When F3 generation was raised by Mendel, और recessive F2 plants produced. recessive plants कौन से प्रोड्यूस करते हैं? recessive plants. The two factor of a pair occur with equal probability in the male and female gamete. क्या होती है? Equal probability होती है. Now, D. Varis Correns and Ernst Waldschmidt independently rediscovered the Mendel's law of inheritance. Identical twins arising from the fertilized egg are genetically identical to each other through they are offspring of their parent.
The strand which do not code for any protein is called non-coding strand. Thymine is not applicable to RNA. RNA के अंदर थायमिन नहीं होता. थायमिन के रिप्लेस में क्या होता है? थायमिन की जगह यूरेसिल होता है. ओके, थायमिन नहीं होता. A DNA molecule is made up of two polynucleotide chains which are antiparallel and complementary to each other. Now, the backbone is made up of sugar, phosphate, deoxyribose, sugar and phosphate. A nucleosome consists of two components, histone protein. Species found within an original population and in the same geographical area are called sympatric species. Recombination of generation are produced by crossing over and independent assortment. Okay, so this is the crossing over and this is the independent assortment. Atmosphere of the primitive earth was highly reducing while that of the present earth is highly oxidizing. So these are the fill in the blanks. जहां मैं अंडरलाइन कर रही हूं ये आपके क्या है? fill in the blanks है. Okay. Now, free oxygen gas was absent in the primitive Earth's atmosphere. The first organism was presumed heterotrophic and anaerobic, some of which might have evolved into anaerobic autotrophs. Rhizobium is a symbiotic antofixer, while Azotobacter is a free-living soil antofixer. In paddy field, cyanobacteria are most important biofertilizer. Chemical fertilizer and pesticides are the source of widely spread pollution. Okay, now spores of Bacillus thuringiensis produce insection Bt crystal protein. Agarose gel electrophoresis is employed to check the progression of a restriction enzyme. This is the digestion. Plasmid and phases are the vectors which are used for cloning purpose in prokaryotes. There are two general type of plasmid, single copy plasmid and multi-copy plasmid. The plasmid vector is isolated from the bacterial sand and cleavage at the one side by restriction endonuclease. किससे होता है? Restriction endonuclease से. Recombinant DNA technology is also popular called as genetic engineering. उसे हम क्या कहते हैं? Genetic engineering. ADA enzyme crucial for immune system to function. Transgenic mice are being used to test the safety of polio vaccine. Basmati rice is distinct for unique aroma and long slender grain. Biopsies are taken from the cancerous tumor. Now we start our very short question answers. ये हमने fill in the blanks complete कर लिए हैं. Now we will move on to very short question answer. Now the first is what is colostrum? Colostrum क्या है? The colostrum is thick yellowish first milk secreted by mother. Mother के through जो first milk secrete होता है, this is known as the colostrum after child birth. और ये क्या होता है? It is very rich in antibiotics. इसमें क्या होती है? बहुत ज्यादा antibiotics present होती है and provide immunity and nutrition to the newborn. जो न्यूबॉर्न बेबी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि न्यूबॉर्न बेबी को कोलेस्ट्रम दिया जाए जो फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है मदर से. तो वो क्या करता है? एंटीबॉडी उसके अंदर रिच होती है और वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है. ठीक है. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ मिल्क सिक्रीशन आफ्टर पास्चुरेशन बाय फीमेल? क्या इंपॉर्टेंस है मिल्क सिक्रीशन की? तो ये क्या करेगा कि इट प्रोवाइड्स कंप्लीट न्यूट्रिशन टू द न्यूबॉर्न. न्यूबॉर्न बेबी है तो उसको पूरा न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? मदर के मिल्क से.
ठीक है, और वो किस में हेल्प करता है, उसकी ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। और उसमें क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है जो उसको अदर इंफेक्शन से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। नाउ डिफाइन ओव्यूलेशन, व्हाट इज ओव्यूलेशन, क्या होता है ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच मैच्योर एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी। तो ओव्यूलेशन में क्या हो गया, जो मैच्योर एग है वो क्या होता है, रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरी इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ओके, कब होता है, ड्यूरिंग द मैस्टुरेशन साइकिल। ओके, तो व्हाट इज द ओव्यूलेशन, क्या टर्म है ओव्यूलेशन? So the process in which mature egg is released from the ovary into the fallopian tube during the maturation cycle. Now define spermatogenesis. अब what is the spermatogenesis, क्या है? Spermatogenesis is the process by which sperms are formed from male germ cells in the testis. तो सबसे सिंपल स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, जिसके अंदर स्पर्म्स फॉर्म होते हैं, किससे फॉर्म होते हैं, मेल जर्म सेल से, कहां पर, टेस्टिस। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज असेंशियल फॉर द ओव्यूलेशन इन फीमेल, कौन सा हार्मोन असेंशियल है ओव्यूलेशन के लिए? द हार्मोन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। व्हाट इज द हार्मोन, कौन सा हार्मोन है, दिस इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड इट्स शॉर्ट फॉर्म इज LH। ठीक है, तो LH की फुल फॉर्म क्या हो गई, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज लैक्टेशनल एमोनेरिया, लैक्टेशनल एमोनेरिया क्या है? तो दिस इज द लैक्टेशनल एमोनेरिया इज द टेम्परेरी एब्सेंस ऑफ मैस्टुरेशन cycle a woman during the period of breastfeeding after child birth। कि मतलब कि जो लैक्टेशनल एमोनेरिया है, तो इसमें वुमन के अंदर मैचुरेशन साइकिल टेम्परेरी स्टॉप हो जाता है ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ। जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है, तो जो चाइल्ड है मदर मिल्क सिक्रीट करता है, मदर मिल्क गेन करता है। तो एट दैट टाइम जब तक वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तब तक टेम्परेरी मैस्टुरेशन साइकिल क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो दिस इज नोन एज द लैक्टेशनल एमोनेरिया, इसे हम क्या कहेंगे, लैक्टेशनल एमोनेरिया। नाउ नेम 2 STDs which are transmitted through contaminated blood, कंटामिनेटेड ब्लड के थ्रू ऐसी कौन सी एसटीडी डिजीज है? तो दीज आर द HIV एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। तो ये डिजीज कौन कौन सी है, HIV एड्स या फिर आपकी हेपेटाइटिस बी। नाउ द नेक्स्ट इज वेयर वाज द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली डेवलप, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली कहाँ डेवलप हुई है? ठीक है, द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली वाज डेवलप्ड इन इंडिया एट द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली कहाँ डेवलप हुई है? तो इट इज डेवलप्ड इन इंडिया एट द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। ओके, नेम द पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम फॉर मेल्स, मेल्स के लिए कौन सा पॉपुलर ब्रांड है? दिस इज द निरोध। नाउ व्हाट इज द सुटेबल टाइम फॉर MTP, MTP क्या है? दिस इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MTP, क्वेश्चन यू भी पुटअप हो सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MTP? द फुल फॉर्म ऑफ MTP इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द सुटेबल टाइम फॉर MTP, ये तो क्वेश्चन है ही, या फिर क्वेश्चन में से क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MTP। ठीक है, तो दिस इज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, नो व्हाट इज द टाइम पीरियड? तो द टाइम पीरियड ऑफ MTP इज ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ओके, एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितना होता है? फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट 12 वीक्स होते हैं, दिस इज नोन एज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इट इज सेफ फॉर द मदर, ये जो टाइम पीरियड होता है ये मदर के लिए सेफ होता है। ठीक है, इस समय हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। पर्सन ऑफ विच एज ग्रुप अपीयर टू बी मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स STD, तो कौन से
एज ग्रुप के पर्सन होते हैं जो टूवर्ड द ये एसटीडी के अगर उस समय सेंसिटिव होते हैं, तो दिस इज द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24 ईयर्स। तो एज ग्रुप हमारा कौन सा होता है इसमें? 15 to 24 ईयर्स वाला एज ग्रुप होता है। What are the limitation in the natural method of contraception? की limitation क्या है natural method of contraception की? The first is जो they are less reliable and have a higher chance of failure. The second is they require strict and self-control and correct timing. And the third is they do not protect against STDs. So these are the limitation. Okay. Now the next is these are the it is very important question क्योंकि इसमें से कोई सी भी टर्म पूछी जाती है। कितनी बार आप कोई सा भी पेपर देख लीजिए पीवाईक्यू, कोई ना कोई एक टर्म जरूर आती है। तो यहाँ पे मैं आपको सारी टर्म्स के बारे में बता रही हूँ। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, द फर्स्ट टर्म इज IUD। व्हाट इज IUD? दिस इज द इंट्रायूट्राइन डिवाइस। What is the full form of IUD? This is the intrauterine device. MTP, medical termination of pregnancy. RTI, reproductive tract infection. Okay. Now, the next is IUT, intrauterine transfer. Gamete, GIFT, gamete intrafallopian transfer. ZIFT, zygote intrafallopian transfer. ICSI, intracytoplasmic sperm injection. IUI, intrauterine insemination. IVF, in vitro fertilization. And STD, sexually transmitted disease. तो ये सारी हमने जितनी भी टर्म्स थी इंपॉर्टेंट, सारी हमने सभी टर्म्स की फुल फॉर्म कर ली है, क्योंकि इसमें से कोई भी एक या दो टर्म जरूर आती है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ओके। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट आर म्यूटाजन। ठीक है, तो म्यूटाजन आर फिजिकल और केमिकल एजेंट दैट कॉज चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कि ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में जो चेंज कर रहे हैं दे आर नोन एज द म्यूटाजन। ओके। Now, the next is write the symptoms of hemophilia disease. Hemophilia disease के क्या symptoms है? Excessive bleeding, even from the small cuts and injuries. बहुत ज्यादा bleeding हो जाती है हीमोफीलिया में, क्लॉटिंग नहीं बनती है, डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कि जब हमें कहीं से कट लग जाता है तो कितनी जल्दी ब्लड रुक जाता है, तो दिस इज द क्लॉटिंग। तो जो हीमोफीलिया पर्सन है उसके अंदर उनके अगर कोई भी छोटी सी भी इंजरी हो गई तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। फ्रिक्वेंटली नॉन ब्लीडिंग एंड ब्लीडिंग इनटू जॉइंट कॉजिंग पेन एंड स्वेलिंग। कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहती है और जॉइंट्स में एंड जो आपके जितने भी जॉइंट्स है वहां पे पेन और स्वेलिंग कॉज करती है। राइट एनी टू यूज ऑफ पेडिग्री एनालिसिस इन ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर पेडिग्री जो चार्ट हम बनाते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो इट हेल्प्स टू ट्रेस द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द ट्रेट और जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जो या फिर फ्यूचर जनरेशन की जो फ्यूचर जनरेशन में जो जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं उनके बारे में हमें प्रिडिक्शन मिल जाता है, और जो जेनेटिक डिजीज है वो भी हम उसको पैटर्न कर सकते हैं। नाउ a person suffering from Down syndrome has trisomy of 21st chromosome. Explain the reason of abnormality in this chromosome. कि क्या रीजन है abnormality का इस क्रोमोसोम में? ओके, तो Down syndrome occurs due to non digestion of chromosome 21 during meiosis। कि यहाँ पर नॉन जो 21 क्रोमोसोम है वो प्रॉपरली डिवाइड नहीं हुआ है मियोसिस के अंदर, इन विच क्रोमोसोम फेल टू स्प्रेड प्रॉपरली, वो स्प्रेड प्रॉपरली नहीं हुआ है। एज अ रिजल्ट द चाइल्ड रिसीव एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21।
leading to trisomy of this chromosome. X bodies were found in 50% sperm absent in rest. Write the sex chromosome makeup of male insects. कि यहाँ पर X bodies were found in 50% sperm and absent in rest. तो यहाँ पर हमें किसका बताना है? Insects का. So if X bodies are present in 50% sperm and absent in the rest, it shows that the male is hetero. कैसा है? हिट्रोगैमेटिक. मेल कैसा होगा? हिट्रोगैमेटिक. इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है? तो इंसेक्ट्स में कैसा होगा मेल? हिट्रोगैमेटिक. Therefore, the sex chromosome makeup of male insect is XO. क्या बन जाएगा? XO. Half sperms carry X chromosome, half carry no sex chromosome. For prevention of which disease TAB vaccine should be taken? TAB vaccine कब हमें यूज में ली जाती है? तो this is the TAB vaccine taken prevention of typhoid fever caused by Salmonella typhi. Salmonella typhi. This is the another very short question answer कि जो typhoid fever है किसके थ्रू होता है? What is the agent? This is the Salmonella typhi. ओके और ये इसके प्रिवेंशन के लिए हम कौन सी वैक्सीन लेते हैं? टीएबी वैक्सीन. नाउ हाउ इज अ बिगनिंग बैंजिंग ट्यूमर डिफरेंट फ्रॉम मैलिगेंट ट्यूमर? कि जो बैंगिंग ट्यूमर है वो मैलिगेंट से किस तरह से डिफरेंट है? तो इसके अंदर ग्रो स्लोली होती है, रिमेन्स लोकलाइज्ड एंड डज नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. तो जो हमारा बैंगिंग ट्यूमर है इसके अंदर वो अदर बॉडी में स्प्रेड नहीं होता है, वो एक ही जगह लोकलाइज्ड होता है, जहां पर है वो वहीं पर ही रहता है. जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर ग्रोथ रैपिडली, यहाँ पर ग्रोथ कैसी है? स्लोली स्लोली होती है. और यहाँ की मैलिग्नेंट के अंदर रैपिडली होती है, इन्वेड्स नियर बाय टिश्यू एंड कैन स्प्रेड अदर ऑर्गन्स. तो जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वहां पर भी क्या हो जाता है? ये स्प्रेड हो जाता है. ओके. स्मोकिंग कॉज इंक्रीज in blood pressure and emphysema expinin. Smoking increase blood pressure because nicotine cause narrowing of blood vessels and increase heart rate. कि क्या कर रहा है स्मोकिंग? इंक्रीज कर रहा है ब्लड प्रेशर. क्यों इंक्रीज हो रहा है ब्लड प्रेशर? तो निकोटीन क्या करेगा? नैरो कर देगा ब्लड वेसल्स को. जो ब्लड वेसल, जो ब्लड फ्लो हो रहा है, अगर उन्हें प्रॉपर वे नहीं मिलेगा, अगर उन्हें प्रॉपर पाथ नहीं मिलेगा, क्योंकि निकोटीन ने क्या कर दिया है? पाथ को श्रिंक कर दिया है, छोटा कर दिया है. तो उससे क्या होगा? ब्लड को मूव करने में, थ्रो करने में, जो मूव ऑन करने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा. तो उससे क्या होगा? जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा. हार्ट रेट क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी. ओके. नाउ the next is it leads to emphysema by damaging the air sac alveoli of the lungs, reducing their elastic and breathing capacity. तो उससे क्या होगा? एल्वोलाई को बहुत ज्यादा पंप करना पड़ेगा, प्रेशर करना पड़ेगा. तो उससे क्या हो जाएगा? वो डैमेज हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी. ओके. नाउ नॉर्मल सेल्स डू नॉट ग्रो लाइक कैंसरस सेल्स. व्हाई? जो नॉर्मल सेल है वो कैंसरस सेल्स की जैसे ग्रो नहीं करती. व्हाट इज द रीजन? जो नॉर्मल सेल्स है शो कंट्रोल ग्रोथ एंड स्टॉप डिवाइडिंग आफ्टर अ लिमिट. जो वो नॉर्मल सेल जो होती है वो एक टाइम पीरियड तक ही ग्रो करती है, उसके बाद वो ग्रो करना, डिवाइड करना क्या कर देती है? स्टॉप कर देती है. बट जो कैंसरस सेल है वो डिवाइड अनकंट्रोलेबल ड्यू टू लॉस ऑफ ग्रोथ रेगुलेशन. कि वो अनकंट्रोलेबल ग्रो करती ही जाती है. क्यों करती जाती है? लॉस ऑफ ग्रोथ रेगुलेशन. कि जो उसका ग्रोथ रेगुलेशन है वो लॉस हो जाता है. आइडेंटिफाई, नेम द पैथोजन, सिम्टम्स एंड मोड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ एम्ब्रियोसाइसिस, अमीबोबाइसिस. तो अमीबोबाइसिस का जो पैथोजन है वो कौन सा है? एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका. ठीक है. सिम्टम्स क्या है? डायरिया, एब्डोमिनल पेन, म्यूकस, ब्लड इन स्टूल. ठीक है. ट्रांसमिशन क्या है? थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. ठीक है. तो अमीबोबाइसिस, दिस इज द पैथोजन, सिम्टम्स एंड ट्रांसमिशन.
नेम द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क को कर्ड में कौन कन्वर्ट करता है? दिस इज द लैक्टोबैसिलस. व्हाट इज द आंसर? लैक्टोबैसिलस. फुल फॉर्म ऑफ बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. ठीक है. विच बैक्टीरिया यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड? so this is the acetobacter aceti. Which bacterium is found in the root nodules of the leguminous plants? This is the rhizobium. Okay. Now, what do you mean by fermenters? Fermenters कौन से होते हैं? A fermenter is a large vessels or bioreactor used to grow microorganisms for producing useful products like alcohol, antibiotic, and enzymes. Which fungus is used and biocontrol agent to control plant disease? This is the trichoderma. What is the answer? Trichoderma. Now next, which protein is found in the transgenic cow roses? The protein is useful to human alpha lactivirium. Which gene is used to protect the maize plant from corn borer? This is the Bt gene. Bacteria, Bt toxin, Bacillus thuringiensis. Give one application to this technology. This is the production of human insulin. GMO, genetically modified organism. ठीक है. Adenosine diaminase. So this is the required to proper function of the immune system. Its absence causes severe immune deficiency. Name the type of interaction between the vernal growth on the back of whale. This is the commensalism. Okay, so these are the question answers. ये सारे क्वेश्चन आंसर्स थे जो हमने सारे क्वेश्चन आंसर करे हैं. ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आप देखेंगे. ओके, नाउ दीज आर ये सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है, आप इनको याद करेंगे. यस, यहाँ पर सिपी विष्णोही का हैप्पी बर्थडे है. हैप्पी बर्थडे. ओके, हैप्पी बर्थडे सिपी विष्णोही. ओके, नाउ ओके, नाउ चलो अब हमने सारे इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट एमसीक्यू एंड फिलअप्स कर लिए हैं. कल हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर और ऐसे टाइप क्वेश्चन आंसर. ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन. ओके, थैंक यू.